Good morning, students. Myself, Dr. Purnachandra Mahapatra, lecturer in botany of Nalanda Vidya Mandir Plus 2 Science College, Berhampur. And today we are continuing the chapter Reproduction in Flowering Plants. Reproduction in Flowering Plants chapter I have already 3 class sari deise. This is your 4th class. Tale, as the name indicates, chapter name रो जानी पारले reproduction in flowering plants. Reproduction विषय रे हमें discussion करछे. So reproduction करिवा पई flowering plants रे अर्थात higher plants रे sex organ दरकार. So the nature has made the flower. Flower is the modified shoot meant for sexual reproduction. फूल गोटे परिवर्तित रूप shoot रो जोटे sexual reproduction हवा पई सेटा तयारी हेछि. एवं फूल रे हम देखिले Androecium is the male sex organ and gynoecium is the female sex organ. Androecium is the male sex organ, gynoecium is the female sex organ. Previous class गुडी रे हम डिस्कशन करले जे एंड्रोसियम भितरे मेल गैमेटोफाइट बा माइक्रो गैमेट तयारी होछि. मेल गैमेटोफाइट ये ला एंथर ए एंथर भितरे हम देखले माइक्रोस्पोर तयारी होछि. से माइक्रोस्पोर टा पोलिनेशन द्वारा एठी पडिबो, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन रो स्टिग्मा रे पडिबो एवं फर्दर डेवलपमेंट ए स्टिग्मा रे हमें देखियो पाइबा. सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी हमें पढि सारले, अर्थ मेल सेक्स सेल तयारी हे सारला, से प्रोसेस हमें जानि सारले. देन वर्तमान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हवा पई गछरे कोन दरकार, फीमेल सेक्स सेल तयारी हवा दरकार. सो फीमेल को हमें कहबा मेगा. So mega gamete रो synthesis by development को हम इसी process को हमें कहबा mega gametogenesis. So this process is called mega gametogenesis. तेणु previously already हमें micro gametogenesis विषय पढ़ी सारले by development of male gametophyte पढ़ी सारचे. आज हमें पढ़ीबा development of female gametophyte by mega gametogenesis. तल देखो ए mega gametogenesis एठी हमें जो देखिले गाइनोसियम अछि. ए गाइनोसियम रो दिस स्टिग्मा, दिस वन स्टाइल एंड दिस बल्बस स्ट्रक्चर इज ओवारी. ए मेगा गैमेटोजेनेसिस एई स्थान रे हमें देखियो पाइबो. एठी मेगा गैमेट तयारी हो बा फीमेल सेक्स सेल तयारी हो बा हम कहया बोले ओव्यूल तयारी हो से पाखरे. तो ए दिस स्ट्रक्चर इज द ओवारी, दिस इज स्टाइल, दिस वन इज स्टिग्मा and the parenchymatous tissue which connect the ovary and ovule is called placenta. So there is a small protuberance develop on the placenta. Placenta upare kiछि patch of cell एडी फुली जीवो. So protuberance माने just गोटे फुली की किछि उठिबा. एडी हम देखले small protuberance develop on the placental tissue. Then out of that one of the hypodermal cell will enlarge in size. One of the hypodermal देखो epidermal माने पूरा ऊपर कवरिंग को हमें कहबे epidermis एवं epidermis रो जस्ट तळ लेयर टा को हमें कहबा hypodermis. तण epidermis रो जस्ट तळ लेयर रो जो सेल गुडी को अछि सेथरो गोटिए सेल से साइज रे ग्रो करिवो, दैट विल swollen, से फुली जीवो एवं सेही गोटिए सेल रो स्ट्रक्चर एठी हमें पढिबा. से गोटे सेल को हमें कहले आर्किस्पोरियल इनिशियल. Then that archisporial initial undergoes periclinal division. हमें देखले ग्राउंड अछि, ग्राउंड सहित हमते 90 डिग्री हेले एंटीक्लिनल डिविजन, ग्राउंड सहित पैरेलल हेले पेरिक्लिनल डिविजन. एटा हम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करिचे. सो एठी हमें देखले the archisporial initial undergoes periclinal division to form outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. So एठी डिवीजन हे गला माने गोटे अपर सेल गोटे लोअर सेल हम देखिबा. ए जो अपर सेल दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैराइटल सेल एंड ए लोअर सेल को हम कहबा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल. देन दैट अपर सेल दैट इज प्राइमरी पैराइटल सेल दैट undergoes repeated anticlinal and periclinal division to form nucellus and integument. ए जो हमें देखिले ए जो
प्राइमरी पैराइटल सेल ए प्राइमरी पैराइटल सेल बारंबार एंटीक्लिनल डिवीजन हला एंड पेरिक्लिनल डिवीजन हला हे कि एठी हमें न्यूसेलस देखले न्यूसेलस ए जो वॉल हमें देखले दिस इज न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट माने ए साइड रे हम देखियो पाइबा इंटेगुमेंट तैयारी हला then this primary sporogenous cell a tala cell the lower cell that grows in size and that become the megaspore mother cell that will in future will be megaspore mother cell so एठी megaspore mother cell तैयारी हो जाउची and ए जो primary parietal cell रू nucellus तैयारी हला and integument तैयारी हला वर्तमान this primary sporogenous cell undergoes meiosis to form a linear tetrad. A primary sporogenous cell undergoes meiosis. Meiosis माने reductional division हला. Reductional division है कि linear tetrad. अर्थात एटे लाइन रे चारटा सेल तैयार हैला ताको हम कहबा linear tetrad. वर्तमान ये होची integument. इंटेगुमेंट ग्रोस इन साइज एठी इंटेगुमेंट हम देखले एठी इंटेगुमेंट से साइज रे ग्रो कला परे हम देखले लिनियर टेट्राड ए चारटा सेल को हम कहबा लिनियर एमती सीधा अछि लिनियर चारटा सेल अछि सो दैट इज कॉल्ड टेट्राड देन दिस लिनियर टेट्राड आउट ऑफ द फोर सेल the cell present near the base that grows in size and it will be megaspore mother cell the functional megaspore mother cell and the upper three gets degenerate ए ऊपर रो तीनटा सेल आस्ते आस्ते डिजेनरेट हे जिवो से सुखी की डेथ हे जिवो से सेल गुडी करो एवं द सेल प्रेजेंट नियर द बेस रे जो सेल अछि से सेलडा दैट विल ग्रो इन साइज एंड इट विल बी द मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल रे से कन्वर्ट हला एठी भी हम देखिबा इंटेगुमेंट एठी भी अछि ताले एठी हम देखले मेगास्पोर मदर सेल तैयारी हला सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल that is called megasporogenesis female spore तैयारी हला so mega माने female mega indicates female and megasporogenesis the formation of megaspore or it is the haploid megaspore from diploid primary sporogenous cell this process is called megasporogenesis he sarla pare this megaspore will be the megagamete ए जो embryo sac तैयार हैला ता भीतर female gamete तैयार हैला so the process of formation of female gamete ba megagamete from the megaspore is called megagametogenesis এই process को हमें कहबा megagametogenesis तनो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल रु मेगास्पोर तैयारी हा प्रोसेस को हम कहबा मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर रु मेगागेमेट तैयारी बाहला मेगागेमेटोजेनेसिस वर्तमान हम देखिबा द मेगागेमेटोजेनेसिस so the megaspore mother cell undergoes three successive free nuclear division this megaspore mother cell undergoes three successive free nuclear division 3 माने तीन थर सक्सेसिव माने इमीडिएटली माने विदाउट एनी गैप इमीडिएटली 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माने सेल डिवीजन हमें जाने छे it has two step that is karyokinesis and cytokinesis that is division of nucleus and division of cytoplasm एठी हम देखिबा न्यूक्लियस डिवीजन हबो बट सेल वॉल डिवीजन हबोनी so nuclear division is not followed by cell wall division that is called free nuclear division and cell wall will be laid down after 8 nucleus stage 8टा nucleus हला परे cell wall formation हो ताले पुनी कहूची रिपीट करूची this megaspore mother cell will undergoes 3 successive
free nuclear division. 3 माने 3 थर, successive माने लागी लागी, free nuclear माने nuclear division will occur but cell wall formation will not be occur and cell wall formation occur after 8 nuclear stage. ताले हमें एठी देखिले एई सेल ही एठी हमें डायग्राम करछे मेगास्पोर मदर सेल that undergoes 3 successive division, 1 root 2, 2 root 4, 4 root 8, 3 successive nuclear division. So after first division the one nucleus will become 2 nucleus and that each nucleus move to opposite pole. One nucleus move towards the Kalachal end and other nucleus move towards the micropylar end. Then each nucleus of each pole will again undergoes mitosis. So a nucleus puni dita hala, a nucleus puni dita hala. So you will find 2 nucleus near the Kalaja and 2 nucleus near the micropyle. Then each nucleus undergoes again mitosis. So these 2 become 4, these 2 nucleus becomes 4. So 4 nucleus will be near Kalajal end, 4 nucleus will be near micropylar end. Then 4 nucleus near the Kalajal end. Out of the 4 nucleus near the Kalajal end, only 3 will remain near the Kalaja and 1 will move towards the center. ए जो चारिटा न्यूक्लियस इछि कालाचल एंड पाखरे सेथरु तीनिटा एई पाखरे रहिबो एवं गोटे सेंटर आडे को मूव करिवो. Then out of 4 nucleus near the micropyle, 3 will remain near the micropylar end and 1 will move towards the center. तीनिटा micropylar end रे रहिबो एवं गोटे सेंटर आडे को मूव करिवो. ताले out of the 3 nucleus near the micropylar end, 2 will be synergid and 1 will be egg cell and the total 3 cell will called egg apparatus. ए जो तीनटा न्यूक्लियस रु दीटा न्यूक्लियस साइड रो दीटा न्यूक्लियस से गुडी को सिनर्जिड हे गला एवं मझिने न्यूक्लियस टा egg cell हे गला. सो ए तीनटा एक सेल को हमें कहबा egg apparatus. Then these 3 nucleus will become antipodial cell near Kalajal end. एटी जो तीनटा न्यूक्लियस हैला से तीनटा न्यूक्लियस एंटीपोडियल सेल हे गला Kalajal end पाखरे and the remaining 2 nucleus will move toward the center. A nucleus टा center आडे move कला, A nucleus टा center आडे move कला and those 2 nucleus will be embedded inside one cell wall. ए दीटा nucleus गोटे cell wall भितरे पैक हे गला, therefore that is called polar body. ताले हमें देखिले एठी मेगास्पोर मदर सेल रु एम्ब्रियो सेक तयार हैला. हमें एठी पढिचे आगुरु हमर मन अछि ए जो wall को हमें कहबा nucellus, the parenchymatous tissue wall. This wall made up of parenchymatous tissue. The wall of the ovule is called nucellus and inside that jaha space अछि se total space is called embryo sac and this embryo sac contains egg apparatus near the micropyle and antipodial cell near the Kalajal end and there is one polar body at the center. So embryo sac भितरे हमें 7टा सेल रे 8टा न्यूक्लियस देखियो पाइले. ताले हमें एठी ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर पढि सारले बा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल पढि सारले बा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगागेमेटोजेनेसिस. ताले कोनी कोछि मेगागेमेटोजेनेसिस consists of 2 phase, that is megasporogenesis and megagametogenesis. One is megasporogenesis, the other is megagametogenesis. So the formation of haploid megaspore from diploid primary sporogenous cell. The formation of haploid megaspore from diploid primary sporogenous cell is called megasporogenesis. That is called megasporogenesis. Megaspore theory होगा process को हमें कहले megasporogenesis. Then the formation of megagamete from megaspore, a ethic step, that is called megagametogenesis. So this egg cell is the female gametophyte and that is found inside the embryo sac. So megaspore ru megagamete तैयारी हा process को हमें कहले megagametogenesis. वर्तमान में देखिया this is embryo sac. So what this is embryo sac
Embryo sac contains 7 cells with 8 nucleus. Embryo sac is embedded by a parenchymatous wall called nucellus, and the embryo sac near the micropylar end, a micropyle पाखरे आमे देखले there are 3 cells, out of that 2 synergid and 1 egg cell. This egg cell is larger than synergid. ए synergid अपेक्षा egg cell का साइज रे टिके बड़ थिबो एवं ए तीनटा एक सेल को आमे कहबा ए तीनटा सेल को आमे कहबा egg apparatus एवं ए दी साइड रो दीटा सेल को कहबा synergid एवं मझी सेल को आमे कहबा egg cell. सेमिति near the callagel end 3 cells present and these 3 cells are called antipodial cell. callagel पाखरे कालाजा पाखरे जो तीनटा सेल अछि ताको हम कहबा antipodial cell, and these antipodial cells they help in drawing nutrients from the nucellus. as a nucellar wall अछि से wall ru nutrition draw करिबारे एमाने help करन, and there is one cell with 2 nucleus present at the center of embryo sac. embryo sac रो मझी रे गोटे सेल रे दीटा न्यूक्लियस अछि, से गोटे सेल रे जो दीटा न्यूक्लियस अछि ताको हम कहले पोलर बॉडी. So this is all about the development of megagametogenesis. Coming class रे हमें pollination विषय रे पढिबा. So sexual reproduction रे हमर दरकार थिला कोन पुनी रिपीट करछि एठी मेल सेक्स सेल तयारी हवा प्रोसेस को हमें कहले मेगागेमेटोजेनेसिस. एठी फीमेल सेक्स सेल तयारी हवा प्रोसेस को हमें कहले मेल सेक्स सेल तयारी हवा प्रोसेस को हमें कहले माइक्रोगेमेटोजेनेसिस. फीमेल सेक्स सेल तयारी हवा प्रोसेस को हमें कहले मेगागेमेटोजेनेसिस. सो हमें माइक्रोगेमेटोजेनेसिस बाय डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढि सारले, मेगागेमेटोजेनेसिस बाय डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पढि सारले. वर्तमान कोन दरकार वर्तमान पोलिनेशन विषय पढिबा, देन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पढिबा, देन फर्टिलाइजेशन पढिबा. फर्टिलाइजेशन हेले फ्रूट डेवलप हो. तेणु कमिंग क्लास रे हम कंटिन्यू करिया. थैंक यू.